Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have discussed about the granules. We have started the chapter of powders and we have seen the classification of various kind of powders, and the last lecture will we end at the granular powders. Now we are going to see another type of granular powder, which is effervescent granular powders. So these are the type of powders which when wet with the water they will release carbon dioxide gas. So what are them? So these are the powders that when they will expose with the water they will release CO2 and make a wet mass and leave a wet mass behind them. Okay, so this is a wet mass. Okay, now we are going to see that what are the components of these granules. So actually these granules is consist of three major elements. So how they are prepared, their preparation is discussed here, that they are prepared from three ingredients. So their three ingredients are, first of all, sodium bicarbonate, then second is citric acid, and largely is consist of tartaric acid. Sodium bicarbonate, and there is another compound which can be used, which is sodium acid phosphatase. So sodium acid phosphate. So when you are going to prepare these kind of powders on large scale, then you will use sodium acid phosphate for it. And if you are going to prepare this powder on small scale, then you can use it. Why we are using it? Because it is very cheap and very easy to be available. Therefore, it is used on the large scale. But this is very expensive compound, so therefore it is not usually used. Now but actually why this carbon dioxide releases when it reacts with the water, the main reason of this is that there is a occurrence of acid base reaction. So यहाँ पर क्या हो रहा है, due to the occurrence of this acid base reaction, the carbon dioxide is released and a wet mass is produced. How there is a base reaction, that that this powder is composed of acid and this is a base. These are a base. So हम बेस को एक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, और whenever there is a reaction between them, the carbon dioxide releases on the reaction with the water. So now we are going to see that why we use both of these acids. We can use only citric acid, we can use only tartaric acid. So actually there is a very important role of both of these powders and they play important role in it. Like if we are going to discuss about the citric acid, so it contain one water of crystallization. So it contain one water of crystallization. ठीक है. And if you deal about the tartaric acid, so tartaric acid is completely anhydrous. Anhydrous. Anhydrous means it contains no water in it. So your citric acid consists of one water crystallization, and your tartaric acid is completely anhydrous, having no water molecules. So therefore we need both of these acids. If we add only citric acid, then it will make the paste very wetty, too much wet paste. And if we add only tartaric acid with the sodium bicarbonate, then it will make our paste very dry, and it cannot be converted into the powder like form. So therefore these two acids are very important. And the next thing is that whenever we mix our NaHCO3 plus acids, so two acids we used citric, C for citric and T for tartaric acid, and both of these acids combine in a proportional way. Like citric acid is as 50% of citric acid,
added, and 50% of tartaric acid will added, and the citric acid will perform 50% of neutralization, because there is a neutralization between the base and between the acid. So it is performing 50% neutralization, it is also performing 50% of neutralization. And after adding both of them, what will happen in the presence of water or in the presence of heat, your dioxide gas is going to release and a wet mass leave behind. Now, how we are going to prepare these effervescence granules? So there are two major methods by which you can prepare it. So what are these methods? So the first method is the heat method, and the uh, second method is wet method. Heat method and wet method. So now I am going to explain both of these methods to prepare effervescent granules. So in the first heat method to prepare it, heat method. So in this method, first of all, you will take your ingredients, and you know very well about these ingredients. I don't have to explain them. You will wave them all. Like you will take about 20 grams of sodium bicarbonate, you will take 10 gram of tartaric acid. Okay, so I am writing, you will take 20 grams of sodium bicarbonate, you will take 10 grams of tartaric acid, 7 grams of citric acid, and then lastly you will add sugar powder in it, which is 6 grams. So now there is a decreasing amount. Okay, so you will add them to it, and after that you will dry mix them. So you will mix all of these compounds, and then you will add them into hot porcelain. So porcelain is added above the water bath, so it will become hot. So porcelain, ठीक है, पोर्सलिन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, पोर्सलिन डिश इज़ यूज फॉर इट. Okay, now this is hotted, very hot, and now you will pour powder on it. So powder इसके ऊपर आ जाएगा. So whenever the powder is on it, what will happen? First of all, the citric acid release its water. So due to release of this water, a paste like composition form. So क्या आपका बन जाएगा, एक पेस्ट सा बन जाएगा आपके पास. और उस पेस्ट के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस पेस्ट को आपने ड्राई करना है. ड्राई करने के बाद आपने इसको सीव नंबर 60 से पास करना है. डिफरेंट किस्म के ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे. जब ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे तो आपने उनको हीट करना है इन ओवन के अंदर, और उसके बाद आप लोगों ने याद रखना कि टेम्परेचर आपने 60 डिग्री से कम रखना है. सो ये पूरा प्रोसेस था हीट मेथड का. अब हम लोग चलते हैं जी ड्राई मेथड की तरफ. Now we are going to see the second method of preparation of these powder, which is the dry powder method. In this method, you will take your ingredients, mix them, and this is the dry mixing. Now you will add wetting agent into it. What is the wetting agent? This can be alcohol. After adding it, it will become a paste like. Now you will dry that paste, and after that pass it through the sieve number 6. The granules will form, and after the formation of granules, you will dry your granules at the 60 degree of temperature, and then lastly you will pack them and dispense them. So this was all about the preparation of effervescent granules. Now we see the example of it. Okay guys, so one thing I have forget to tell to you the equation of it, that when the Na sodium bicarbonate reacts with citric acid. So what is the formula of citric acid? It is C6H8O7. So after that it will form sodium citrate. Sodium citrate. And lastly it will produce 3 molecules of CO2 and 3 molecules of water. Similarly, this is citric acid. Now we have going to add tartaric acid. So what is tartaric acid? Its formula is C4H6O6. ठीक है. So it will form sodium tartrate, tartrate, and release 3 molecules of water and 3 molecules of
कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू विल रिमेंबर दिस। अगर आपको ये सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड का फार्मूला याद नहीं होता तो आप सिंपली इसकी जगह सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड इनके नाम से भी लिख सकते हैं। सो इतना बड़ा कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स की एग्जांपल्स के ऊपर। सो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी? सबसे पहले आपके पास इसकी एग्जांपल में मार्केटेड कुछ पाउडर्स आ जाते हैं, जैसे इको फ्रूट सॉल्ट्स, ठीक है, ये एक पाउडर है जो कि बन रहा है। दूसरा सीट्री सोडा पाउडर, ये भी ग्रैनुलर पाउडर की फॉर्म है। और लास्टली राइनो, ठीक है। सो ई सी आर, ठीक है। सो इससे आप याद कर सकते हैं इकोनो फ्रूट सॉल्ट, सिट्री सोडा एंड राइनो, ये एक आपके पाउडर्स आ जाते हैं, ठीक है। सो ये तो ये हो गया एफरवेसेंट ग्रैनुलर पाउडर। नेक्स्ट जो आपकी टाइप आ जाती है पाउडर्स की, वो है आपके पास बल्क पाउडर। अब बल्क पाउडर क्या है? बल्क, उसके नाम से भी पता लग रहा है कि एक बल्क में हमने पाउडर एक बनाना है। और बल्क पाउडर ये नहीं है कि उसके अंदर एक इंग्रेडिएंट हो, तो उसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे। सो बल्क पाउडर हमेशा उसके अंदर आपको बल्क की फॉर्म में ये दिया जाता है, यानी लार्ज क्वांटिटी में ये आपको दिया जाता है। और पेशेंट लाइक जैसे आपने देखा हो इस तरह की पैकिंग में ओपन इसका कंटेनर होता है वाइड माउथ वाला, और पूरा पाउडर आपको दे दिया जाता है इतना ज़्यादा। सो अब पेशेंट अपने नीड के मुताबिक टीप स्पून से मेजर करेगा जितना उसने लेना होगा और फिर वो यूज़ करेगा। सो बल्क पाउडर इस तरह के होते हैं। सो अब बल्क पाउडर के अंदर क्या चीज़ आ जाती है? सबसे पहले उनकी क्वांटिटी कितनी होगी? क्वांटिटी उनकी होगी बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी। यूज़ करना है तो मेजर करके यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थिंग क्या आ जाती है कि कौन सी ड्रग है जो बल्क पाउडर में यूज़ होती है और कौन सी ड्रग नहीं होती है। सो जो आपके पोटेंट ड्रग्स हैं, अब पोटेंट ड्रग्स से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो ड्रग्स जिनके कुछ पॉइजनस इफेक्ट्स हैं, लाइक आपके एनेस्थीसियाटिक ड्रग्स जो हैं, लाइक बेंजोडिazepam ड्रग हो गई, लोरामाइन ड्रग हो गई, कोडीन हो गई, मॉर्फिन ड्रग्स हो गई। तो इनका एनेस्थेटिक इफेक्ट है, तो हम इसको पेशेंट को ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट ड्रग्स को हम एज अ बल्क पाउडर में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बल्क पाउडर में क्वांटिटी